First doubt है question number 4. Fourth में हमें दिया a wheel having diameter 3 meters starts from rest, accelerates uniformly to a velocity. Starts from rest. Initial angular velocity 0. Final angular velocity is 210 rpm. So इसको रेडियन पर सेकेंड में चेंज कर लो. You have to find angular acceleration of the wheel. And radius of wheel is given as 3 meter. वैसे चाहिए नहीं होगा. Time is 5 seconds. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, in 5 second angular velocity increases to 7.5. The slope is the angular acceleration. यहाँ formula use कर लो. Alpha is equals to so 1.4 radian per second square. Sixth question is ratio of angular speed of R hand to second hand of a watch. For R hand it's 2 pi by 12 hours. And for second hand it's too easy tha question. So 1:720. Seventh is angular speed of Earth about its axis. It completes one revolution in 24 hours. So 2 pi by 86400. यहाँ A part आ जाएगा. Radian per second. Then you have length. Two bodies A and B rotate about an axis such that angle theta A covered by first body is proportional to square of time. And for second body, theta by distance covered varies linearly. At t is equals to 0, theta be both 0, so boundary conditions nahi lagenge if A completes first revolution in under root pi seconds. One revolution in under root pi seconds. The K1 is equals to 2. For second body, it is given it complete half revolution in 4 pi seconds. Half revolutions mean pi in 4 pi seconds. That means theta B is angular velocity. इसमें angular velocity हो जाएगी 40.
You have to find the ratio of angular velocity at t is equals to 5. T is equals to 5. This will be 20 and this is 1 by 4. So 80 is to 1. देख लो क्लियर है सबको कैसे किया है? Tenth is a car of mass 1000 kg moves on a circular track of radius 20 meter. Moves on a circular track of radius 20 meter. Coefficient of friction is given as 0.64. What is the maximum velocity with which car can be moved? Vmax का formula था हमारे पास circular में. Root mu RG. So 11.2 meter per second. 11.2 meter per second. The Earth has radius 6400 kilometer, makes one revolution in 24 hours. Centripetal acceleration. So point on equator. The point on equator radius is radius of Earth r omega square. आंसर में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है तो रेडियस इज 6.4 into 10 raised to power 8. Omega is 2 pi by 86400. इसको सॉल्व करना था बस. r omega square. A coin is placed on a rotating turntable. Just slips if it is at a distance of 40 centimeters from the center. If a coin is placed on turntable, it slips if friction is not able to provide the centripetal force. दोनों साइड को मास से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. The coin will slip if mu r omega square or you can say r is. So if omega is doubled, r will be 1/4. So पहले 40 दिया है तो it will be 10. R dash will be 10 centimeter. The graph shows below angular velocity as a function of time. In which of the following cases angular acceleration is continuously decreasing? Slope किसमें decrease कर रही है? So A part में, B part में constant slope है, C में constant है, D में increase कर रही है. So A part में slope is increasing. So decreasing. Alpha is slope of omega t curve.
particle moves with the deceleration along circle of radius r such that at any movement its tangential and normal acceleration are equal in moduli. Magnitude same. At the initial moment, t is equals to 0. Speed of the particle is v naught. Then initial speed दी है. ये ऑलमोस्ट सबका डाउट है मेरे ख्याल से. किसी का हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? और हमें दिया है at is equal in magnitude to an. Tangential and normal accelerations are equal in magnitude. हमने बताया ना the speed of particle as a function of distance s. The speed of particle as a function of distance s कितनी हो जाएगी? Normal acceleration का formula it's dv by dt. और हमें दिया है रिटार्डेशन है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dv by dt is equals to minus of v square by r. Then you can say that because relation distance के साथ चाहिए इंटीग्रेट कर दो. Plus constant of integration c. C is log v naught. So v is equals to v naught e raised to power minus s square. So maths था थोड़ा सा इंटीग्रेशन करनी थी बाकी it's simple. Then is 25th. A car is traveling on a smooth road, passes through a curved portion of the road in the form of an arc of circle of radius 10 meter. Mass of car is 500 kg. Reaction on the car at lowest point P, where its speed is 20 meter per second. Resultant of N and mg provides centripetal force. That means N minus mg is mv square by r. इसको solve कर लो, values दी हैं सारी. We are given velocity, mass सब given है. Dumbbell is placed on a frictionless horizontal table. Sphere A is attached to the frictionless pivot so that B can be made to rotate about A with constant angular velocity.
if B makes one revolution in period P, tension in the rod, T is equal to mr omega square omega की वैल्यू डाल दो. ये हुआ किसका नहीं? Tension in the rod. हमें आंसर दिया है इन वन रेवोल्यूशन इन पीरियड टी, टाइम पीरियड को पी दिया टी की जगह. So we'll get the answer. Yeah, 43. Block is moved from rest through a distance of 4 meters along a straight line path. Mass of the block is 5 kg. Force acting is 20 Newton. Kinetic energy required is 40 joules. At what angle to the path the force is acting? So Fs cos theta is equals to half mv square. Work energy equivalence. Initial kinetic energy is given. It starts from rest. Force is given as 20 Newton. Move through a distance of 4 meters into cos theta is equals to half. Kinetic energy required is 40 joules. So cos theta is half. Theta is 60. Work done in pushing a block of mass 10 kg from top to the bottom of a frictionless inclined 5 meter long and 3 meter high is work done in pushing the block of mass m from bottom to the top. So हमें A से B तक लेके जाना है work done. Work done in pushing the block. Best method would be कि हम change in energy निकाल दें because change in energy would be work done. So उसको आप bottom से top तक लेके गए तो it would be mgh. कि हमने height बढ़ा दी 3 मीटर, जो भी work done किया that will be stored in the form of potential energy. And this will always be the minimum work because इससे ज़्यादा तो हो ही सकता है if you provide the kinetic energy also. So work done in pushing is increase in potential energy. To 94 joules. Work done by frictional force on a surface and drawing a circle of radius r on the surface by pencil of negligible mass and with normal pressing force n. So work done is F dot S minus Fs cos plus Fs cos 180 or minus Fs. Frictional force is mu n, S is 2 pi r. So minus 2 pi mu n r. So D part. A body of mass m accelerates uniformly from rest to speed v naught in time t naught. The work done by the body till time t. Work done is equals to change in kinetic energy. It accelerates from 0 to v naught in time t. So acceleration is v naught by t naught plus square into t square.
So mv naught square t square upon 2 t naught square. Because a is v naught upon t naught. A light spring of length 20 centimeter, force constant 2 kg per centimeter, is placed vertically on a table. A small block of mass 1 kg falls on it. The length h from the surface of table at which the ball will have the maximum velocity. हमें दिया light spring of length 20 centimeter and force constant 2 kg per centimeter. A small block of mass 1 kg falls on it. Length h from the surface of table at which the ball will have maximum velocity. So कैसे करेंगे इसको? कौन सा formula? Maximum velocity होगी कहाँ? Maximum velocity will be at mean position. तो हमें mean position निकालनी है. Maximum velocity हमेशा mean position पे होगी because उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाएगी. Where mg is equals to kx. x is mg by k. ये कंप्रेशन आ जाएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा 20 माइनस mg by k. डिस्टेंस और हाइट h फ्रॉम ग्राउंड. इसको सॉल्व करना था जो भी आएगा आंसर. नेक्स्ट यू हैव 54. A man who is running has half the kinetic energy of boy of half his mass. Half the kinetic energy of boy. मैन की काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mv स्क्वायर है तो बॉय की हाफ, बॉय का मास हाफ दिया है. एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. दिस मीन्स दैट vm is vb by 2. If the man speeds up by 1 meter per second, they have same kinetic energy. So they have same kinetic energy. vb is given as हमने निकालने किसकी है? मैन की. तो vb को सब्स्टिट्यूट कर दो. vb is twice of vm. क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो जो भी आंसर आएगा. A 1 kg block collides with horizontal weightless spring of force constant 2.75 Newton per meter as shown in figure. The block compresses the spring 4 meters from the rest position if coefficient of kinetic friction is 0.25. Speed of the block at the instant of collision. At the instant of collision बताना है तो work energy equivalence लगा दो. Change in kinetic energy तो zero है तो whatever is kinetic energy it gets converted into work done against friction and energy stored in the spring. Say if spring compresses by x,
Work done to compress the spring. हमें given है values. K is 2.75, X is 4, mu is 0.25, mass is 1. So इसको solve कर दो, U की value आ जाएगी. Next is so ये 56th है. A car of mass m is driven with acceleration a along a straight road against a constant resistive force r. When the velocity of car is v, the rate at which engine is doing work. हमें दिया इसकी acceleration a है. तो इस पे applied force जो लगेगी F minus R is equals to M में. So rate of doing work is power. R plus M into V. A pump ejects 1200 kg of water at a speed of 4 meter per second in 40 seconds. Average rate at which pump is doing work. Average rate of doing work. Half mv square. So this will be answer. Then you have 64. For equilibrium. F should be 0. So दो equilibrium position आ गई. Stable equilibrium के लिए क्या होता है? Minimum potential energy. The double differentiation should be negative or positive. अगर minimum U is minimum, तो double it should be Positive. positive. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ d square U by dx square को minus df by dx minus df by dx would be this should be positive. मतलब 3 minus 4x should be positive. x is equals to half पे अगर हम चेक करें this is positive. X is equals to 2 पे चेक करोगे तो 3 minus 8. Sorry, x is equal to minus half पे चेक करना था. और x is equal to 2 पे चेक करोगे तो नेगेटिव. तो माइनस हाफ पे स्टेबल और 2 पे अनस्टेबल. तो ए बार आ जाएगा आंसर.
सेकंड के डाउट सेंड कर दो जिन्होंने सॉल्व किया, मेरे पास अभी सिर्फ एक के हैं। सो सेकंड के डाउट Excuse me, जिन्होंने sir. नहीं सेंड किए, हाँ जी, सेकंड बहुत डाउट, एक दो तीन डाउट्स भेज दिए आपने मेरे को। एनीवे, सेकंड क्वेश्चन। A machine in an amusement park consists of a cage at the end of one arm, hinged a door. O is center. The edge revolves along a vertical circle of radius r about its hinge O at a constant linear speed under root gr. Cage is so attached that a man of weight W standing on a weighing machine inside the cage is always vertical. Then which of the following is correct? हमें दिया है कि जो machine है that always remains vertical. तो हमने बताना है which of the option is correct, and it's given that it's moving with constant linear speed. Linear speed constant है, मतलब हमने ये नहीं लेना कि उसकी speed vary कर रही है as it moves in a vertical circle. तो motorized है जो भी है, but it's moving with a constant speed. तो basically weighing machine measures the normal reaction, और A और E पे normal reaction अलग अलग होगा. कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, लोएस्ट पॉइंट पे आएगा n is equals to mg plus mv square bar. अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ई पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पॉइंट ई पे सेम इक्वेशन बनेगी, डिफरेंट? N plus mv square by r is equal to m. ये बनेगी या कुछ और बनेगी? यही बनेगी सर. और जी और सी पे मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, सर उसमें इक्वल टू वेट होगा. सर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. इधर भी एन जीरो इधर भी एन जीरो, तो हो गया सॉल्व, आंसर निकाल दो. हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे भी हमें बताना है वेट एट ए. वेट एट ए इज नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा ए पे, कम होगा बी पे, और ratio of weight at E to the weight at A is 0. Ratio of weight reading at A is that चीज वैल्यूज ही पुट करनी है आप तो, because mg and mv सर square जी by और r सी are के बारे में बता दो प्लीज. क्या चीज? जी और सी पहले, जी और सी वाले पॉइंट. g और c पे तो mv square by mg के इक्वल आ गया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है. सर ये ऐसे it's moving in a cage is so attached that a man of weight w is weighing inside the cage. Then which of the following is correct? देखना है इसका पोजीशन वर्टिकल सर्कल दी है.
जी और सी पे नॉर्मल रिएक्शन अगर हम निकालें, सही, इसके अंदर जो mg होगा वो तो डाउनवर्ड लगेगा और जो mv स्क्वायर पे आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, तो वेट के बराबर है ना Tn। तो नॉर्मल यहाँ रिएक्शन mv स्क्वायर बाई r mg क्यूब आ आएगा। जाएगा, mg आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो आंसर तो फिर भी बी और डी ही बनेगा। फोर्थ इज सर इसमें mg कैसे आ रहा है? mg आएगा ना, v की वैल्यू पुट कर दोगे अगर रूट जी आर, तो एम वी स्क्वायर बाय आर mg के इक्वल ही आएगा। ठीक है। A spotlight S rotates in a horizontal plane with constant angular velocity 0.1 radian per second. The spot of light P moves along the wall at a distance of 3 meter. What is the velocity of spot P when theta is equals to 45? थीटा 45 पे लीनियर स्पीड बतानी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एंगुलर वेलोसिटी दी है, मतलब डी थीटा बाई डी टी पता है, और हमने लीनियर स्पीड बतानी है, लीनियर स्पीड कितनी होगी? फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर ओवर आर। वहां बस यही फॉर्मूला होता था। ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर वाला, वी परपेंडिकुलर इस केस में कितना होगा? वी परपेंडिकुलर V sin v sin 45। वी साइन 45 और आर की वैल्यू 3 बाय साइन थीटा। बिकॉज ये अगर आर है तो साइन 45 कितना हो जाएगा? साइन 40 या कॉस 45 कुछ भी ले लो, बिकॉज मेरे को आर निकालना है, ये दोनों साइड्स तो इक्वल है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो जो भी आएगी। थीटा 45 पुट करके ओमेगा 0.1 रेडियन पर सेकेंड। Two moving particles P and Q are 10 meter apart at a certain instant. The velocity of P is given, इसमें भी same angular velocity V perpendicular, V perpendicular relative हो जाएगी इसमें। ये एंगल दिया 30, ये 8 sin 30। और R is given as 10 meter. So omega is V perpendicular relative by R. So 0.7 radian per second. The magnitude of displacement of a particle moving in a circle of radius a with constant angular velocity omega varies with time as. Magnitude of displacement बताना है for a particle moving in a circle of radius a. In time t, angle transversed is omega t. तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी, सॉरी इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो वेक्टर्स लगा दो। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी?
2a sin omega t by So vectors parallelogram law लगाना था, तो you will get the answer. Next. मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते थे अगर ये एंगल पता है तो, बिकॉज इसको ऐसे देख सकते हो, अगर ये थोड़ा सा बड़ा कर दो। देखो अगर ये ए बी निकालना है, दिस साइड इज a minus a omega t and this is a sin omega t. तो ab will be ऐसे भी कर सकते थे, a minus a cos omega t का होल स्क्वायर प्लस a sin omega t का होल स्क्वायर. A particle moves along a circle of radius 50 centimeters so that radius vector relative to point O rotates with constant angular velocity 0.4 radian per second. Then modulus of velocity of the particle and modulus of total acceleration will be. So हमें दिया है point O के about angular velocity constant है. So हमने बताना है velocity उसकी कितनी है और magnitude of velocity and magnitude of acceleration. कैसे करेंगे? किसका हो गया है क्वेश्चन सॉल्व? मैंने एक ही पॉइंट ले लिया, और एक सेंटर वाला पॉइंट ले लिया कोई, बिकॉज ओ इज एनी पॉइंट दिया हमारे को और थोड़ा सा नीचे दिया, लाइक सेंटर है ओ है. कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी? ओमेगा कांस्टेंट दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 2r cos थीटा. इसके दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी के, एक इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? v cos थीटा v sin थीटा. कैसे करेंगे? हमें d थीटा बाय dt दिया है, कांस्टेंट है. ये स्टेप सबको समझ में आया? r यस सर. dr बाय dt क्या होगा? dr बाय dt dr by dt will be अरे ये तो बता दो. अच्छा चलो ये बताओ, इसको अगर मैं ऐसे, मैं आपसे पूछूं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
ये क्या होगा? दिस विल बी, ये कौन सा कंपोनेंट है? वी कॉस बी साइन, साइन बी साइन। डी आर बाई डी टी क्या होगा? स्मॉल आर। ये अगर आर है, टू आर कॉस थीटा। So this comes out to be cos theta की differentiation minus sin theta into d theta by dt. d theta by dt is omega. v कितना आ गया? v की वैल्यू ओमेगा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, तो v कितना आ गया? टू आर ओमेगा। 2r ओमेगा, बिकॉज ये हमें v sin थीटा की वैल्यू आई है। रेडियस कितना गिवन था क्वेश्चन में? रेडियस इज गिवन एज 50 centimeter and omega is given as 0.4. और एक्सेलरेशन टोटल कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 80 कितना होगा? 80 आर अल्फा 0, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 होगा। 80 इज आर अल्फा, 80 इज आर अल्फा, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये 0 ही आएगा। तो सिर्फ ए आर बताना था, बी स्क्वायर बाय आर। बी निकाल लिया हमने, आर पता है। Tangential acceleration of a particle moving in a circle of radius 1 meter varies with time as tangential acceleration और time का ग्राफ दिया है। Time after which acceleration makes an angle of 30 degree with radial acceleration. 80 और time का ग्राफ। ये एंगल दिया है 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताना है टाइम आफ्टर विच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रेडियल एक्सेलरेशन। अगर मैं सर्कल बनाऊं, में ये एंगल दिया है 30, मतलब tan 30 इज ये कंडीशन दिया हमने, बताना है कितने टाइम के बाद ये सेटिस्फाई हो जाएगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ए आर tan 30, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ए आर tan 30। इसका आंसर डिफरेंट आ रहा था। नहीं सर, सेम ही आ रहा था। मेरे को यहाँ से पता है कि स्लोप इसकी कितनी है, tan 60, मतलब 80 इज इक्वल्स टू रूट 3d, मतलब dv बाई dt इज इक्वल्स टू रूट 3d। तो मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सर उस चेंज इन वेलोसिटी से भी निकाल सकते थे ना, कि इनिशियली सर आप इसके अंदर ये भी कर सकते थे कि अगर आप इसके अंदर
टाइम टी ले लो, फिर वहां से उसकी एक्सेलरेशन निकल जाएगी इस ग्राफ से टेंजेंशियल की, फिर वहां से रेडियल एक्सेलरेशन भी निकल जाएगी, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी से फिर रेडियल एक्सेलरेशन निकलेगी v स्क्वायर बाय r से। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, हमारे पास रिलेशन है, बस वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे से वैल्यू से पुट करनी है, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। तो you can say 80 is root 3t, ar is b square by r। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 11th, three identical particles are joined by a thread as shown in figure. All three particles are moving on a smooth horizontal plane about point O. Speed of outermost particle is v naught. Ratio of tension in the three sections। एक तो फ्री बॉडी डायग्राम था सिंपल। सो इक्वेशन से लिखनी है। अगर आउटर मोस्ट के वेलोसिटी v नॉट है, इसका रेडियस ऑफ पाथ है 3l, ओमेगा सबके लिए सेम है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट बाय 3। इसकी वेलोसिटी 2v नॉट बाय 3। इक्वेशंस अगर हम लिखें, इसकी इक्वेशन T3 प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स। इसके लिए लिखोगे तो T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट के लिए लिखोगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, सो T1 T2 T3 निकाल सकते हो। यहां से क्या आएगा? A particle is kept fixed on a turntable rotating uniformly as seen from the ground. The particle goes in a circle. The speed is 20 centimeter per second. Acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to new position to make the radius half the original value. New values of speed and acceleration are. So, हमें दिया it's moving in a circle and rotating uniformly. इसकी linear speed दी है और acceleration दी है। If it's shifted to new position which is at half the radius, so radius of path is reduced to half. So what will be the new value of acceleration and radius? Velocity half हो जाएगी, v is equal to r omega. Rotating uniformly है तो at 0 and tangent radial acceleration is v square by r। तो हमें दिया v भी हाफ हो गया, r भी हाफ हो गया। पहले तो v डैश आ जाएगा और फिर at 0 है, तो ar dash is, एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगी। 13th,
Kinetic energy is given as as square. So this is the centripetal force. Tangential force is Ft. So Fc पता है, Ft पता है, total forces. ये आंसर आ जाएगा. सो बी पार्टी बनेगा, एक ही में इस तरह की टर्म आ रही है. A particle of mass m is fixed to one end of a spring constant k unstretched length. The system is rotated about other end of a spring with angular velocity omega in gravity free space. Gravity लेनी नहीं, increase in length of spring बतानी है. So ये तो simple question था. Increase in length of spring is kx is equal to m omega square r. So values put करोगे तो आंसर आ जाएगा. r कितना लेना है बस इसमें? बिकॉज आपकी इक्वेशन थोड़ी सी बदल के बनेगी. बिकॉज r के x plus l plus x. So you can say k minus m omega square or k minus m omega square. Fifteenth. A circular ring of mass per unit length, radius r, rotates with angular velocity omega in a gravity-free space. So this 2t sine d theta provides centripetal force. So theta small sine d theta can be written as d theta. dm is mass per unit length. ये lambda given है वैसे क्वेश्चन में, into 2r d theta. ये लैम्डा ही ले लो, इसको लैम्डा दिया, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा. So lambda r square omega square. Next, 16th. A uniform rod of mass m length L rotates in a horizontal plane with angular velocity omega. Vertical x is passing through one end. Tension in the rod at a distance of x from one end. Tension in the rod at a distance of x from one end. So जैसे अभी masses वाला क्वेश्चन किया था वैसे इसको कर दो. So D part आंसर आएगा.
क्या बीच में एक स्मॉल लेंथ लेके किसी एक पॉइंट पे टेंशन निकाल लो, हो जाएगा ये अब 16 हो गया था ये पहले भी। बिकॉज डी पार्ट ही आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l 17th the ratio of period of oscillation of a conical pendulum to that of simple pendulum is conical pendulum का टाइम पीरियड होता है 2 pi under root l cos theta upon g और simple pendulum is 2 pi under root l by g सॉरी रेशियो बतानी है तो अंडर रूट cos थीटा कॉनिकल पेंडुलम इज 2 pi अंडर रूट l cos थीटा और उसमें l by g इसमें अंडर रूट l cos थीटा by g सो रेशियो इज रूट cos थीटा नेक्स्ट particle with total energy E moves in one-dimensional region where potential energy is ux. Speed of the particle is zero where kinetic energy zero हो जाएगी तो potential energy will be equals to total energy. यही आएगा ना आंसर. C या D हो सकते हैं. Question number 22. A particle with total energy E moves in one-dimensional region where potential energy is ux. स्पीड जीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है. काइनेटिक एनर्जी जीरो है मींस पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर इक्वल. ए पार्ट तो ठीक है. अब टोटल एनर्जी ई है तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकती. बी गलत है. व्हाट अबाउट सी? सी ठीक हो सकता है. सर डिपेंड करेगा कि इनिशियली रेस्ट पे था कि नहीं. मैं क्वेश्चन देखो क्या दिया है. पोटेंशियल एनर्जी इज यू एक्स मींस पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद एक्स. तो डी यू बाई डी एक्स जीरो नहीं होगा ना. पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद एक्स. तो इसलिए ए पार्ट ही आंसर बनेगा. A box of mass m is released from rest at a position on a frictionless curved track as shown. It slides a distance d along the track in time t to reach position 2, dropping a vertical height h. Let v and a be the instantaneous speed and acceleration respectively at point 2. Which of the following equation is valid? हमें बताना है valid equation कौन सी है. क्वेश्चन में हमें दिया है रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक मतलब नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्स. सिर्फ mg एक्ट कर दिया एंड mg इज कंजर्वेटिव. सो हमें बताना है व्हाट शुड बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर वर्टिकल डिस्टेंस h फॉलो करता है. सॉरी स्पीड इज v एंड horizontal distance traveled is d, vertical is h. ऐसे करो इसको. Firstly say that as no non-conservative force x. VGT के इक्वल होगा या नहीं होगा? VGT के इक्वल होगा या नहीं होगा? बॉडी अगर इस पॉइंट से स्लाइड करके नीचे आती है, हमें जो डायग्राम दिया है, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूं तो हमारे पास एक कंडीशन तो ये बनती है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. बाकी कोई ठीक है?
H is equal to half GT square, H is equal to VT, D is equal to half AT square. सर बी ठीक है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली वो 0 पे था और सर एक्सेलरेशन जी है h इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर। तो आपको लगता है कि बी पार्ट ठीक है, H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर होगा? H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर होगा इसमें? ये फ्री फॉल में होता है या सरफेस के ऊपर बॉडी मूव करे तो होता है? फ्री फॉल में होता है। H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर तो फ्री फॉल में लेते हैं, यहाँ पे फ्री फॉल वाली इक्वेशन लगा सकता हूं मैं कि बॉडी की कॉन्स्टेंट मोशन है। फ्री फॉल की इक्वेशन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते थे, कंसिडर वर्टिकल डायरेक्शन, कंसिडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नहीं लगा सकते इसमें आप इक्वेशन, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट कर रहा है। सो सिर्फ एक ही पार्ट ठीक है। Ball of mass m is attached to lower end of a light vertical spring of force constant k. Upper end is fixed. Ball is released from rest. With spring unstretched length comes to rest again after descending through a distance of. It will come to rest after descending through a distance of 2 mg by k. Half kx square is equal to mgx. मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगी जब इक्विलिब्रियम होगा। x by 2 पे, और डी पार्ट भी ठीक है। बॉल विल हैव एन अपवर्ड एक्सेलरेशन इक्वल टू g at lowest point. So acceleration at lowest point is g upwards. Potential energy given at 3x plus 4y. The position coordinates x and y. Particle is initially at rest at 6, 4. में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया है, मास ऑफ बॉडी दिया है। सॉरी, ये इंफॉर्मेशन दी है। एक्सेलरेशन बतानी है कितनी है। स्पीड व्हेन इट क्रॉसेस बाई एक्सिस and it crosses by axis at a given point, it moves in a straight line path. So चारों ऑप्शंस चेक करनी पड़ेंगे इसमें। तो कैसे करें? u गिवन है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर मैं आपसे पूछूं? 42 जूल्स। H64 kinetic energy is 0. Implies total energy is equals to potential energy, मतलब 3 into 6 plus 4 into by coordinate कितना है 4. 6 So 18 plus 16. 34 joules.
उसके बाद हमारे पास फोर्स हमारे को पता है, मास 1 kg है, तो यही एक्सेलरेशन भी हो जाएगी। थ्री आई माइनस 4j। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमने बताना है वाई एक्सिस को कब क्रॉस करेगा। इनिशियली वो 6 4 पे है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज -3i - 4j। स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या नहीं होगा? Initial velocity 0, acceleration constant है, path followed will be straight line or not? स्ट्रेट लाइन हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो यहां से क्रॉस करेगा, यहाँ पे y 0 है, तो क्या आएगी y की वैल्यू? सर वाई एक्सेस दिया है। y एक्सिस तो और नीचे ले जाओ। सर टाइम निकाल लिया था इसमें बेसिकली कि सर मतलब 6 डिस्टेंस ट्रेवल कराने में इनिशियली 0 और एक्सेलरेशन -3 है। आंसर सर आया वही कि टाइम नहीं आया? सर आ गया था आंसर तो। और एक्सटेंड कर दो, इसमें क्या है? So, अब तो हो गया सॉल्व। आपको एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस ट्रैवल सारे पता है, आपको टाइम निकालना है और सॉल्व कर देना। हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाता है। नेक्स्ट, बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना ही मेन काम था, बिकॉज वहां से पाथ पता चल जाता। 28 29 30 comprehension. A particle of mass m is released from height h on a smooth curved surface which ends in a vertical loop of radius r. Choose the correct statement if h is equal to 2r. Particle reaches the top of a loop with zero velocity. Conservation of energy लगा दो। Conservation of energy लगाएंगे तो when it moves from A to B, हमने उसको रिलीज किया है, तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। So it will not complete the vertical circle. Velocity at lowest point should be at least √5 gr.
So it will not complete the vertical circle. So B part ठीक है. It cannot reach. और एक D ठीक आ जाएगा because इस केस में ऐसे पाथ होगा. यहाँ से इधर तक जाएगा and then it breaks off. So दो ऑप्शन ठीक होंगी. Because velocity lies between root 3gr and root 5gr. So it will break off at some point. If theta is instantaneous angle which the line joining the particle and the center of a loop makes with vertical, identify the correct statement related to the normal reaction n. At any instant, if body is at this point, which line joining particle makes with a vertical, this angle is theta. Then identify the correct statement related to normal reaction. Normal reaction कितना होगा इस केस में? मैं अगर इस पॉइंट पे पूछूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg plus mv नहीं mg so n minus mg cos theta is mv square by r. अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, यहाँ पे वेलोसिटी अगर b है तो इट विल बी cos theta is r minus h by r. तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो. मैथ्स में देख लेना कोई गड़बड़ ना हो रही हो. VL square minus 2GH. So normal reaction is इसके अकॉर्डिंगली अब आंसर देने थे सारे. Because normal reaction हमने निकाल लिया in terms of H and R and you can find the answers अब सारे. Minimum value of H required to complete the circle. So 5 by 2 आ रही है तो lowest point पे velocity कर दो. Lowest point पे velocity root 5gr तो उसका accordingly H निकल आएगा. excuse me sir
हाँ जी, सर हम इस क्वेश्चन में इतना सब किए बिना डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे मतलब मैक्सिमम होगा अगर क्योंकि आपको याद है रिजल्ट्स तो कर सकते हो, मतलब याद है, मतलब इसके याद है तो कर सकते हो। नेक्स्ट इज 31. F is equals to ki cap plus x 33. Sorry, x is f is equal to ki y cap. Sorry, k y I cap plus x j cap, where k is positive constant. X on a particle moving in xy plane starting from 3 5. The particle move is taken along a straight line to 5 7. Work done by the forces. वर्क डन बाय द फोर्स बताना है, वर्क डन बाय द फोर्स, और हमारे को फोर्स दी है, फोर्स इज वेरिएबल, तो आप ले लोगे इट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो सॉल्व कर दो सिर्फ। इजी था, ये क्यों नहीं हुआ? हमें दिया है दैट वेरिएबल फोर्स है, हमारे को लिमिट्स दी हैं 15 to 35। तो सॉल्व भी करना था, सिर्फ नॉन मेडिकल वालों के लिए तो इजी था क्वेश्चन। तो 20 क्या आ जाएगा वैल्यू पुट करके? नेक्स्ट 34. A 10 kg block is pulled in the vertical plane on a frictionless surface in the form of arc of circle of radius 10 meter. The applied force is 200 Newton if the block started from rest at A. Velocity at B would be. Velocity at B कितनी होगी? Angle displacement कितनी है? R theta into F cos 0. एनर्जी कंजर्वेशन से कर लिया था। एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो बिल्कुल। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है mgr 1 माइनस cos थीटा, और वर्क डन पता है, तो जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। यस सर, ऐसे ही किया था हमने। ये सॉल्व करना था बस। Thirty-fifth. In the figure shown, all surfaces are frictionless. Mass of block is 1 kg. The block and wedge are initially at rest. Now wedge is given horizontal acceleration of 10 meter per second square by applying force on the wedge, so that block does not slip on the wedge. Work done by normal force in ground frame on the block in root 3 seconds. Work done by normal force in 3 seconds बताना है। Question number 35. वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इट्स बीटी, मतलब अगर मैं वेलोसिटी निकालूं पहले इस बॉडी की, हमारे को दिया इट्स रूट 3 सेकेंड्स। दो ही फोर्सेस वर्क कर रही हैं ग्राउंड फ्रेम में।
ग्रेविटी का वर्क डन 0 है, तो यही निकालना। मास पता है, वेलोसिटी पता है, यू कैन फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। मास हमारे को 1 kg दिया था, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन। So 150 joules. Next is 39th. A wedge of mass m is fitted with a spring of spring constant K kept on a smooth horizontal surface. Rod of mass m is kept on a wedge as shown in figure. The system is in equilibrium. Assuming that all surfaces are smooth, potential energy is stored in the spring. तो आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज mgx। क्यों नहीं हुआ 39th क्वेश्चन? बिकॉज स्प्रिंग में हम ले लेंगे इट्स kx cos kx चेंज इन लेंथ, और वो mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है। बेसिकली मैं सिर्फ इतना ही डायग्राम बनाऊंगा तो भी हो जाएगा। kx इस डायरेक्शन में, so you can find energy stored in the spring, half kx square. So m square g square tan square theta by 2k. Fiftieth. A particle originally at rest, the highest point of a smooth vertical circle, is slightly displaced. It will leave the circle at a vertical distance below the highest point. We say that body leaves the circle if mg cos theta can't provide centripetal force. Leaves the circular path if can't provide centripetal. तो प्रैक्टिकल कंडीशन ले लेंगे जहां तक प्रोवाइड कर सकती है। We can say mg cos theta सर्कल पे तभी मूव करेगा अगर इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाय r से कम हो। Two by three.
cos theta is 2/3. So 2/3 यार. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे. कल लगाएंगे एडवांस की क्लास. असाइनमेंट सेंड कर दूंगा मैं अभी. और संडे को एडवांस का बैच जो लगा रहे हैं उनका एडवांस का टेस्ट होगा, बाकी सबका मेंस वाला होगा. एडवांस वालों का एडवांस का टेस्ट होगा.